Hello, nomads. I'm Shub, and I welcome you once again to our channel, The Rolling Nomad. Well, this is the final episode of the vlog that covers our ride to the Hogenakkal Falls. So you keep watching the vlog as I share some information which you're gonna find helpful if you are planning a trip to the Hogenakkal Falls anytime soon. तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सैटरडे है जब हमने ट्रिप प्लान किया है। और सैटरडे को अगर आप कहीं पे जाने का प्लान करते हो, क्वाइट नेचुरली यू आर गोइंग टू फाइंड ए लॉट ऑफ क्राउड इन प्लेसेस विच आर वेल नोन, विच आर फेमस एज टूरिस्ट अट्रैक्शंस। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू शेयर सम डिटेल्स विच यू आर गोइंग टू फाइंड हैंडी इफ़ यू आर कमिंग टू होगेनक्कल। तो शुरू करते हैं। सैटरडे को अगर आप आना चाहते हो, संडे को अगर आप आना चाहते हो, बिल्कुल आ सकते हो, बट एक्सपेक्ट करके आइएगा कि यहाँ पे आपको क्राउड मिलना ही मिलना है। वेल रास्ते पे क्योंकि हम लोग मोटरसाइकिल से आए और नॉर्मली टोल रोड्स पे मोटरसाइकिल्स आर नॉट चार्ज्ड, सो वी डिड नॉट इनकर एनी चार्जेस अपार्ट फ्रॉम जब हम होगेनक्कल के कन्फाइंस में घुसने ही वाले थे। वी हैड अ ड्रॉप गेट, वी वर स्टॉप्ड एंड वी वर आस्क्ड टू पे अबाउट a nominal 20 to 30 rupees for taking our bikes within the confines of Hogenakkal. Now those charges are exempted for people who are local. हम क्योंकि बैंगलोर से आ रहे थे, हमको रोका गया और हमसे 30 रुपये या तो 20 रुपये कुछ चार्ज किया गया फॉर पार्किंग। वी फाइनली रीच्ड होगेनक्कल, जहाँ पे बोटिंग के चार्जेस कुछ ऐसे थे कि अगर बोटिंग का जो गिवन ड्यूरेशन है उसको ही अगर आप लोग यूज़ करते हो बोटिंग के लिए, सो यू आर गोना बी पेइंग 1500 रुपीज़। एडिशनली अगर आप बोटमैन को कहीं आगे लेके जाके डिप लगाना चाहते हो या फिर आप वाटरफॉल के नीचे खड़े होके टाइम स्पेंड करना चाहते हो, फॉर ऑल दोज थिंग्स यू आर गोना बी चार्ज्ड एन एडिशनल 500 रुपीज़। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स प्रीटी मच वर्थ इट। हमको करीब 1 से 1.5 घंटे तक बोट में सफ़र कराया गया एंड वी डिड नॉट फील बोर्ड इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप आते हो, कितने लोग आने से आप पूरी तरह से सफ़र का मज़ा ले पाओगे? आई वुड से एटलीस्ट कम एज अ टीम ऑफ 4 पीपल। कम आओगे तो आपको किसी और बोट के साथ क्लब कर दिया जाएगा, सो इफ़ यू आर फाइन विद दैट it's totally okay. Otherwise, minimum 4 people is what they require to fill the boat. So come as a team of 4 people. Overall experience काफ़ी अच्छा रहा, but I feel a little pity about the place because यहाँ पे जो पानी था it was pretty frothy. एक तो शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशिंग होता है, प्लस लेटली ऐसा कुछ हुआ होगा कि काफ़ी सारे मछली यहाँ पे मरे पड़े हुए होंगे। There we come across so many new people. Rashmi is the world. You can just से सफर में निकलने का एक मजा होता है। सब कुछ अपने कहानी का पार्ट बनता है। तो जगह ऐसी है कि मानो बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है भीगने का, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कपड़े कुछ लाए नहीं है। The place, to a certain extent, up to a certain region, was pretty foul smelling. But beyond that, the place was good. The water was pretty fresh. The water was pretty clean, and we also took a dip in the river. We were swimming for some time, so all of that is fine. But I really feel कि अगर इस जगह को थोड़ा सा और अच्छे से मेंटेन किया गया होता, the experience would have gone a few notches up at least. So that's pretty much about it. Hogenakkal was a beautiful experience for all of us.
तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, इफ़ यू फाउंड द इंफॉर्मेशन शेयर्ड ऑन दिस व्लॉग यूजफुल एंड हेल्पफुल, like this video, subscribe to the channel, and feel free to share your feedback in the comment section. So until we meet again in a new video, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, take care, stay well, and keep your love and good wishes with me. This is the Rolling Nomad signing off for now. Namaste, Allah Hafiz, adios amigos.